So starting with the equations or acid basis salts. बल्कि acid basis salts हम पहले कर लेते हैं रिवाइज, वो that's an important topic. तो उसके बाद we can once we know how to make an equation फिर जल्दी से moles कर लेंगे रिवाइज. ठीक है. अच्छा, acid basis salts. Acid basis salts में you need to know what are acids. तो acids क्या होते हैं? They are proton donors. प्रोटॉन किसे कहते हैं? H प्लस आयन को. ठीक है, that's what a proton is. Then you have bases. These are H plus 1 proton acceptors. अच्छा, ये दो चीज़ें. और एसिड और बेसिस की इंपॉर्टेंस मैंने बताई थी कि क्विक व्हाट वाज द इम्पोर्टेंस के वाटर की इंपॉर्टेंस होती है. एवरीवेयर यू हैव वाटर मॉलिक्यूल्स ऑन प्लैनेट अर्थ. तो उसके अंदर ना मोस्टली you've got water molecules, lots and lots of water molecules. But a few of the water molecules, they like to ionize. ठीक है, partially they're bumping around, so they would break down into H plus 1 and OH ions. So that's what normally water is. लेकिन अगर आप इसमें एसिड डाल दो तो एसिड क्या करेगा? एसिड would increase the quantity of H plus 1 ions. So the solution would become acidic. ठीक है, जो भी water है, like the solution that's in your stomach, that is acidic. और vice versa, अगर आप उसमें ना वो डाल दो, बेस डाल दो, तो H plus 1 कम हो जाते हैं और relatively OH ions की quantity जो होती है वो ज्यादा हो जाती है. ठीक है, इज दिस क्लियर? वॉइस क्लियर है? Yes. अच्छा. So we've got acids and bases. अब the other thing about acids and bases is कि acids के नाम, formulas वगैरह etc. everything. पहले तो यहाँ पे वो लिख भी लूँ कि neutral state के अंदर ना, which is known as pH 7. ठीक है, pH की कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए, बस ये पता होना चाहिए कि pH 7 is a mathematical calculation that's made using mostly an instrument. pH 7 means, what does it mean? It means that the H plus 1 concentration is the same as the OHN concentration. ठीक है, that is what pH 7 is. If it's acidic, तो उसका pH जो होगा that would be less than 7. And acidic के अंदर the H plus 1 quantity is higher compared to the OHN quantity. Then you've got basic. That's pH greater than 7. And basic के अंदर you have H plus 1 being less than OH ions. ठीक है, तो ये तीन टाइप्स के सॉल्यूशंस होते हैं. एंड रिएक्शंस दैट आर हैपनिंग ऑन प्लैनेट अर्थ, इनसाइड द ह्यूमन बॉडी, इनसाइड द सेल्स, हर कुछ पानी में हो रहा है. एंड द टाइप ऑफ वाटर दैट यू हैव, it really is going to affect the reaction. ठीक है, if a reaction happens in acidic conditions, then it will not happen under basic conditions. If it will happen in basic conditions, it's not going to happen in acidic conditions. ठीक है, and so on. So पहली चीज किसी भी रिएक्शन की होती है, आप pH चेक करते हो. ठीक है. अच्छा, next one. We're going to write the names of acids. तो एसिड्स के जो नाम है वो सारे के सारे याद होने चाहिए. मैं सिंपली वो कॉपी पेस्ट ही कर लेता हूँ. ठीक है, जस्ट 1 सेकेंड. वो इंस्टेड ऑफ राइटिंग ऑल ऑफ देम. शीट तो है ना, डेटा शीट है सारों के पास? Yes, yes. ठीक है, उसको अपने साथ रखना, वो इम्पोर्टेंट है. उसको तो पूरा रट्टा लगाना है. ठीक है, तो दिस वन. अच्छा, एसिड बेसिस सॉल्ट्स, डेटा शीट, रिविजन एसिड, तो ये वाली कर लेते हैं. अच्छा, इधर टॉप कॉर्नर के अंदर ना ये सारे फॉर्मूलाज आयंस के और द नेम, सॉरी, अच्छा, formula of the ions and the name of the acids that is given. So I'm just going to
Copy that. ठीक है, तो ये आपके पास आ गया एसिड्स के नाम. मेक श्योर यू रिमेंबर देम बाय हार्ट. मतलब मस्ट है, ठीक है, उसके बगैर कोई काम नहीं चलेगा. What's a nitrate, hydroxide, etc. ठीक है. What's an acid? You've got nitric acid, hydrochloric acid, carbonic acid. ठीक है, all of them, their formulas are given. Acid बनता किस तरह के? Acid बनता है कि it's a substance that produces H plus ions. तो इसका मतलब है it has H plus ions plus it has some other negative ion. ठीक है, ये दोनों combine हुए होते हैं. So if you combine H plus 1 with SO4 minus 2, the compound that you're going to get is crisscross करो तो it's going to be H2SO4. ठीक है, that's it. तो ये आपके एसिड्स हैं. और साथ ही ना मैं वो कर लेता हूँ कि बेसिस, कि which compounds are basic, which are bases. तो बेसिस के अंदर मैंने एक्सप्लेन किया था, बेसिस आर प्रोटॉन एक्सेप्टर्स. Now there's no limitation to bases, मतलब any compound could be proton acceptors. ठीक है, प्रोटॉन एक्सेप्टर्स का मतलब है दे गेन H plus ions. But the usual suspects are anything that contains O minus 2 ion. अच्छा, O minus 2 ion जो होता है ना, that likes to gain H plus ions, तो वो foreign H plus 1 gain कर लेगा and it would form H2O. अच्छा, then you have OH minus 1 ion, that's उसको भी H plus 1 gain करने का शौक है, it likes to gain H plus 1 ions and it would also form H2O. अब एक तीसरा सस्पेक्ट है which is weakly basic, it's a carbonate ion. Carbonate is CO3 and it has a charge of minus 2. अच्छा, इसके अंदर it has an oxygen ion which gains an H plus 1 ion, two of the H plus 1 ions to form H2O. And what's left is carbon dioxide. मतलब carbonate में से ना one of the oxygen goes and ends up gaining H plus 1 ion. So this one is weakly basic. And these are usually strong bases. ठीक है, ये clear है सारों को? Yes, yes. अच्छा, and similarly, अच्छा, and similarly, we have another thing going on which is खैर ये bases हैं, ठीक है. अच्छा, bases अकेले नहीं होंगे, it's they're going to have, but a negative ion would not exist alone. It's either going to be a metal oxide, ठीक है. So it's either going to be a metal oxide because metals are positive ions, or it's going to be a metal hydroxide, or it's going to be a metal carbonate, ठीक है. इसके अंदर मेटल के साथ you can also have another positive ion which is ammonium ion, so it could be ammonium hydroxide, or it could be an ammonium carbonate as well, or any positive ion next to a carbonate, ठीक है. अच्छा, ये bases हैं आपके. तो अब I'm starting off with the first reaction. The first one is reaction number 1, और बस quick revision union. First one is a metal plus acid reaction and it produces salt plus hydrogen gas. As it's going to produce salt plus H2. तो मेटल क्या होगा कि मेटल, अच्छा रिमेंबर मेटल के अंदर you have to be careful कौन से मेटल्स यूज करने. क्या बताया था मैंने, कौन से मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं? Does anyone remember? Group 1 and group 2. Group 1 and 2. नहीं, नॉट ग्रुप 1 एंड 2, मैजेट मेटल्स होता था, एक वर्ड होता था रिएक्टिविटी सीरीज. ये वो होते थे
जो नॉर्मली रिएक्ट करते थे, यू हैड मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन एंड टेन। इससे पहले जो होते थे ना, अदर मेटल्स आर आइदर टू रिएक्टिव और टू अनरिएक्टिव। So they're either too reactive, so you would get an explosion, or too unreactive. ठीक है, so you had these mazid metals. Reactivity C's मैं पूरी लिख देता हूँ. Just for clarity, you've got KNaCa, AlZnFe, अच्छा Eu and Pt. अच्छा ये सारे हैं और इसमें ना the ones over here mazit, यहाँ तक इनके नॉर्मल रिएक्शंस होते थे. एज के बाद जो मेटल्स होते थे ना, दे वुड हार्डली रिएक्ट विद एसिड्स. ठीक है, डाइल्यूट एसिड के साथ तो बिल्कुल भी नहीं, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कह रहा हूँ, नो रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड्स. विद डाइल्यूट एसिड्स तो यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होता था, और लेड वुड ओनली रिएक्ट विद heat is needed if you want lead to react. और ये जो टॉप वाले ना, ये तो एक्सप्लोसिव होते थे. ठीक है हमजा, इज दिस क्लियर? Yes, sir. अच्छा एनीवेज, रिएक्शन पे आ जाते हैं. मेटल प्लस एसिड प्रोड्यूसेस सॉल्ट प्लस H2. So let's pick magnesium first. So I've got magnesium, and it's reacting with phosphoric acid H3PO4. तो क्या बनेगा? सॉल्ट प्लस H2. सॉल्ट हमेशा किस तरह बनती थी कि get rid of the H, put Mg in its place. So it's going to be Mg and PO4. But Mg is group 2, so it's 2 plus, and PO4 is 3 minus. So crisscross करोगे तो it's going to be Mg3, PO4 twice, plus there's going to be hydrogen gas that's going to be released. ठीक है, तो ये remember to crisscross when you're forming the salt. इसको भी हटा लेते हैं. And the next thing is you have to balance this. तो आपने बैलेंस करना है, तो Mg 3 है तो there should be 3 Mg, PO4 is twice, so that's 2 PO4s, and hydrogen is 6, so there's 3 multiplied with this. ठीक है, is this clear? ठीक है, क्लियर है. अच्छा इसमें बस अब ये करो कि जल्दी से मुझे पहले ना एक तो इक्वेशंस तो सेंड करो. एल्यूमिनियम प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, मेक दिस इक्वेशन and send it.